Hello students, welcome to the next video on pilot plant scale-up relevant documents. In this video, we'll be seeing what are the various documents that are being needed for pilot plant scale-up. Getting? So, let's begin with the video. So, basically students, you know that pilot plant scale-up, it has several important documents are prepared to ensure its smooth and successful transition from laboratory scale to a large scale production. These documents helps to provide a clear roadmap, maintain consistency and facilitate communication amongst various stakeholders involved in the process, and some key documents for pilot plant scale up are mentioned under. ओके तो जब भी हम पायलट प्लांट को स्केल पे लेकर जाते हैं तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. दिस डॉक्यूमेंट्स, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हमको एक क्लियर आइडिया देते हैं रिगार्डिंग दी रोड मैप, हम किस तरह से प्रोसीड करने वाले हैं, कंसिस्टेंसी और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके फीडबैक्स वगैरह वगैरह. ओके तो फॉर दिस पर्पस दिस डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो the first needed document or the relevant document is process development report. This report documents the findings and results from the laboratory scale experiments and process developed activities. It outlines the process parameter, equipment use and key observations from the research phase. तो यहाँ पे आप क्या करते हो, वो चीज़ें डॉक्यूमेंट करते हो जो आपने लैब स्केल पे आपने फाइंड आउट किया, उसके लिए आपने कौन सा प्रोसेस यूज़ किया, पैरामीटर्स क्या थे, इक्विपमेंट्स क्या यूज़ किया, ऑब्जर्वेशंस क्या थे, है ना. सो विच हैज़ टेकन इट टू अ रिसर्च स्केल. सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, दैट इज़ प्रोसेस डेवलपमेंट रिपोर्ट. मूविंग टू नेक्स्ट वन. सो द सेकेंड document is process validation protocol. So students developed a process validation protocols outlines the step and criteria for scale up. यहाँ पे the process validation protocol defines the procedures, acceptance criteria and the number of batches required for validating the scale up process. It outlines the step for verification and validation of the manufacturing process in the पायलट प्लांट. इन शॉर्ट, आप जो भी प्रोसेस कर रहे हो, है ना, उसके लिए एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, कितने बैचेस होने चाहिए. सो ऑल दोज थिंग्स यू आर गोइंग टू डॉक्यूमेंट हियर. देन मूविंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, also known as BMRs. A detailed video on batch manufacturing record was already been prepared. You can also find out the link to assess the video. So BMR provides detailed step-by-step instruction for each batch produced in pilot plant. They include informations on raw material, equipment, process parameters and quality control test performed during production. So यहाँ पे जो भी बैच फॉर्मुलेट हो रहा है वो बैच के बारे में पूरी की पूरी जानकारी, since the raw material to its final quality controls or quality test. Okay. So all the things are included in this batch manufacturing record, and this is also one of the relevant document that is needed. Then moving to next one, that is standard operating procedures, that is SOPs. So SOPs details the standardized procedures for various activities in pilot plant such as equipment operations, cleaning, maintenance and sampling. They ensure consistency and provide guidelines for personnel to follow during scale up. Thus, create detailed SOPs for each manufacturing step, cleaning procedures and quality control testings to ensure consistency and compliance. So during your pilot plant studies, whatever steps are being followed, उसका एक proper SOP होना चाहिए, है ना. तो वो SOP क्या करेगा कि द पर्सन हु इज हैंडलिंग इट विल गिव हिम अ क्लियर आइडिया दैट व्हाट स्टेप्स ही इज सपोज टू फॉलो, उसे क्या करना है, किस सीक्वेंस में करना है, उसे एक प्रॉपर आइडिया आ जाएगा व्हेन ही गोज थ्रू दैट रिस्पेक्टिव SOP. ओके, सो अ वीडियो ऑलरेडी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन SOP. यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द लिंक
and go to the video for detailed understanding of SOPs. Then moving to next one, that is the next document is stability study protocols and reports. So if the pilot plant is producing a product intended for long-term storage, stability studies are conducted to assess the product stability over time. Draft a stability study protocol to determine product shelf life and storage condition. Record and analyze stability data in stability study reports. So if any of the product that has been prepared is to be stored for a longer duration, you should have the reports of pre and post stability studies. आपने जो भी कुछ फॉर्मुलेशन बनाया हुआ है उसका इमीडिएट स्टेबिलिटी कैसा है और स्टोरेज करने के बाद स्टेबिलिटी में कोई अल्टरेशंस या वेरिएशंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, है ना. सो दोज थिंग्स यू नीड टू report. Okay, then the next is equipment qualification and calibration reports. This report documents the qualification and calibration status of equipments used in the pilot plant. They verify that the equipment is suitable and properly calibrated for intended use. So students, you know, whatever the instruments are being used, whatever the equipments are used, they need to be calibrated after a certain interval, right? So it is needed to verify that whatever equipments have been utilized, have been used, they all are being calibrated. Okay, then moving to next one, cleaning validation protocol and report. The cleaning validation protocol outlines the procedure for cleaning equipments between batches to avoid cross contamination. The report provides the result and conclusions of the cleaning validation study. So how the cleaning has to be done, right? That all needs to be documented, and that is all included in cleaning validation protocol and report. ठीक है. So cleaning करने के बाद whatever the result is, whatever the conclusion is, still if there is any sort of any growth of the microorganisms because of the contamination or whatever it is, so that things are to be documented. Then moving to next one, material and raw material specifications. So material specification detail the required quality and characteristics of materials used in pilot plant. Raw material specifications ensure that the raw material meets the necessary standards before use in production process. तो यहाँ पे जो भी मटेरियल हमको रिक्वायर्ड है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो ऑल दोज थिंग्स इज बीन स्टडीड इन पायलट प्लांट. ऑल्सो द रॉ मटेरियल्स दैट आर बीइंग यूज्ड, इट इज verified that they fulfill the necessary standard in order to be utilized for production process. Okay, then so even that reports are to be maintained. Moving to next one, that is risk assessment and change control document. So risk assessment are conducted to identify potential risk during scale up and develop मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज़. तो कौन कौन सी पोटेंशियल रिस्क हैं जो हो सकते हैं और उसको हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज़ डेवलप किए जाते हैं. चेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड्स एनी चेंज मेड टू प्रोसेस इक्विपमेंट और मटेरियल ड्यूरिंग स्केल अप एंड द करस्पॉन्डिंग अप्रूवल्स. तो ये हो गया रिस्क असेसमेंट, यानी वी फाइंड आउट द पोटेंट रिस्क दैट कुड हैपन एंड व्हाट कुड बी द प्रिवेंटिव मेजर्स दैट कुड बी टेकन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क. एंड चेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या होता है कि ऐसा डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है, ड्यूरिंग योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इफ़ यू हैव मेड एनी सॉर्ट ऑफ अल्टरेशन, फॉर एग्जांपल आपने आरपीएम चेंज किया है ना, या फिर आपने टेम्परेचर चेंज किया, आपने ह्यूमिडिटी चेंज किया, आपने जो भी कुछ चेंज किया हुआ है, तो उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन विच इज मे बी रिलेटेड टू द इक्विपमेंट और मटेरियल, तो उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अलॉन्ग विथ इट्स प्रॉपर अप्रूवल. सो दैट डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड एज चेंज कंट्रोल documentation. So even that documentation you are supposed to, that record you are supposed to maintain. Okay, then moving to next one, quality control test methods. So students, this document outlines the test method used to assess the quality of product and intermediate samples during sample scale, and prepare standard operating procedures, that is SOPs, for quality control testing, including methods, instrument used and acceptance criteria. ओके, तो आपने जो भी कुछ बनाया हुआ है उसके लिए एक प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल सेटअप
ठीक है, what quality control has to be done, so what method should be used, or what instrument should be used, what is the accepted criteria, so all that needs to be properly documented. Okay, so by considering these conditions and maintaining a comprehensive documentation, pharmaceutical manufacturing can effectively scale up their product from pilot plant to a commercial scale up production while ensuring products quality, safety and regulatory compliance. तो अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली मेंटेन करते हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस डॉक्यूमेंटेशन यू कैन proceed from a pilot scale to a commercial scale production by maintaining the quality, safety and regulatory compliance of your product. Okay, so these documents provide a comprehensive framework for pilot plant scale up, and they play a crucial role in regulatory compliance and product quality assurance. So that's all students in our today's video. I hope you have understood the relevant documents of pilot plant scale up. So thank you students for watching this video till end. See you soon. Thank you.